how Narayana, the creator of the universe and the self-sufficient Lord, has differently created the nature, activities, form, features, and names of the different living creatures. Every living being is under the plan of his natural inclinations in terms of the modes of material nature. His work is manifested of his nature under the three modes. His form, his bodily features are designed according to his work, and his name is designated according to his bodily features. We discussed this. Okay. The next verse. So he's inquired. In the 10th verse also we did. We'll take the 11th verse. 10th verse was, O my Lord, I have repeatedly heard about these higher and lower statuses of human society from the mouth of Vyasadeva, and I have had enough of this lesser subjects, matters, and their happiness. They have not satisfied me with the nectar of topics about Krishna. Hmm. का तृप्नुया तीर्थपादा अभिधना सत्रेषु वा सुरभिर्विद्यमानात् या कर्णानादिं पुरुषस्य यातो भवाप्रदां गेहरतिं चिनन्ति. Who in human society can be satisfied without hearing sufficient talk of the Lord, whose lotus feet are the sum total of all places of pilgrimage, and who is worshipped by great sages and devotees? Such topics can cut off one's bondage to family affection simply by entering the holes of one's ears. ये कर्णनादिम पुरुषस्य यातो भ्रवा प्रदाम गेह रतिम छिनाति. Bhava pradam is the cycle of birth and death, and geharatim. Geharatim is the affection and attachment to the household affairs. And chinati means it is severed or it is cut off. Provided it enters the ears. This is very important. Entering the holes of one's ears. Krishna Katha is so powerful that simply by entering into a person's ear, it can at once give deliverance from the bondage of family affection. Family affection is an illusory manifestation of the external energy, and it is the only impetus for all mundane activities. As long as there is mundane activities and mind is absorbed in such engagement, one has to undergo the repetition of birth and death in the current material nations. People are most influenced by the mode of ignorance, and some are influenced by the passionate mode of material nature. And under the spell of these two modes, a living being is actuated by the material conception of life. The mundane qualities do not allow a living entity to understand his real position. The qualities of both ignorance and passion strongly bind one to illusionary body conception of the self. Or best among the fools who are thus deluded are those who engage in altruistic activities under the spell of material mode of passion. You understand what is altruistic activities? Altruistic activities. Who understand what is altruistic activities? हम्म, बोलिए. If you have raised your hand, then please unmute and speak. Prabhuji, philanthropic activity, philanthropic. Yes, yes, correct. Philanthropic welfare of others. Social service.
The Bhagavad Gita, which is the direct Krishna Katha, gives humanity the elementary lesson that the body is perishable and the consciousness which is spread throughout the body is imperishable. The conscious being, the imperishable self, is eternally existent and cannot be killed under any circumstances, even after the dissolution of the body. Anyone who misunderstands this perishable body to be the self and who works for it in the same name of sociology, politics, philanthropy, altruism, nationalism, or internationalism, under the false plea of the bodily conception of life, is certainly a fool and does not know the implication of reality and unreality. Some people are above the modes of ignorance and passions and are situated in the mode of goodness. But mundane goodness is always contaminated by tinges of ignorance and passion. Mundane goodness, sorry, mundane goodness can enlighten one that the body and the self are different, and one in goodness is concerned with the self and not the body. But those in mundane goodness, due to being contaminated, cannot understand the real nature of the self as a person. Their impersonal conception of the self as distant from the body keeps them in the mode of goodness within material nature. And unless they are attracted by Krishna Katha, they will never be liberated from the bondage of material existence. Krishna Katha is the only remedy for all people of the world because it can situate one in pure consciousness and this of the self. Krishna Katha is the only remedy for all people of the world because it can situate one in pure consciousness of the self and liberate one from material bondage. To preach Krishna Katha all over the world as recommended by Lord Chaitanya is the greatest missionary activity. And all sensible men and women in the world may join in this great movement started by Lord Chaitanya. So he is asking, he is inquiring that one should never be satisfied with hearing Krishna Katha. Actually, one is hearing, his thirst for hearing will be more. Because such topics can cut off one's bondage to family affection. This is the only way. मुनिर्विवक्षु भगवद्गुणानां शखापिते भ्रमतम आह कृष्ण यस्मिर्निर्नाम ग्राम्य सुखानुवादे मतिर्गृहीता नुहरे कथायाम. Your friend, great sage Krishna Dvaipan Vyas, has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work, the Mahabharata. But the whole idea is to draw the attention of the mass of people to Krishna Katha, the Bhagavad Gita, through their strong affinity for hearing mundane topics. So he's referring that your friend Natri Muni is very senior. He is the close friend of Vyasadev, Krishna Dvaipan Vyas. And he is referring that Vyasadev has already described about the Supreme Lord in his great work Mahabharata. And also in Mahabharata he is given Bhagavad Gita. The great sage Krishna Dvaipan Vyas is the author of all Vedic literature, by which his work Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam and Mahabharata are very popular readings. As stated in the Bhagavatam, Srila Vyasadeva compiled the Mahabharata for the less intelligent class of men who take more interest in mundane topics than in the philosophy of life. The Vedanta Sutra was compiled for persons already above the mundane topics who might already have tasted the bitterness of the so-called happiness of mundane affairs. The first aphorism of the Vedanta Sutra is Athato Brahma Jigyasa. Only when one has finished the business of mundane inquiries in the marketplace of sense gratification can one make relevant inquiries
regarding Brahman, the transcendence, those persons who are busy with the mundane inquiries which fill the newspaper and other literature are classified as Stri Shudra Dvija Bandhus or women, the laborer class and unworthy sons of the higher classes, Brahmana, Kshatriya, and Vaishya. Such less intelligent people cannot understand the purport of the Vedanta Sutra, although they may make a show of studying the sutras in a perverted way. The real purport of the Vedanta Sutra is explained by the author himself in Srimad Bhagavatam. And anyone trying to understand the Vedanta Sutra without reference to Srimad Bhagavatam is certainly misguided. Such misguided persons who are interested in the mundane affairs of philanthropic and altruistic work under the misconception of the body as the self would better take advantage of the Mahabharata, which was specifically compiled by Srila Vyasadeva for their benefit. The great author has compiled the Mahabharata in such a way that the less intelligent class of men who are more interested in mundane topics may read the Mahabharata with great relish and in the course of such mundane happiness can also take advantage of the Bhagavad Gita, the preliminary study of Srimad Bhagavatam or the Vedanta Sutra. Srila Vyasadeva had no interest in writing a history of mundane activities other than to give the less intelligent persons a chance for transcendental realization through the Bhagavad Gita. Vidura's reference to the Mahabharata indicates that he had heard of the Mahabharata from Vyasadeva, his real father, while he was away from home and was touring the places of pilgrimage. सश्रद्धधानस्य विवर्धमान विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुःखापायाम असुधाते. For one who is anxious to engage constantly in hearing such topics, Krishna Katha gradually increases his indifference towards all other things. Such constant remembrance of the lotus feet of Krishna by the devotee who has achieved transcendental bliss vanquishes all his miseries without delay. So, how one can be free from miseries? This is explained in this verse by constant remembrance of the lotus feet of the Lord. He must know for certain that on the absolute plane, Krishna Katha and Krishna are one and the same. The Lord is the absolute truth, and therefore his name, form, qualities, etc., which are all understood to be Krishna Katha, are non different from him. The Bhagavad Gita being spoken by the Lord is as good as the Lord himself. When a sincere devotee reads the Bhagavad Gita, this is as good as seeing the Lord face to face in his personal presence. But this is not so for the mundane wrangler. All the potencies of the Lord are there when one reads the Bhagavad Gita, provided it is read in the way recommended in the Bhagavad Gita by Lord himself. One cannot foolishly manufacture an interpretation of the Bhagavad Gita and still bring about transcendental benefit. Anyone who tries to squeeze some artificial meaning of the interpretation from the Bhagavad Gita for an ulterior motive is not Shraddhadhana Pumsaha. One engaged anxiously in bona fide hearing of Krishna Katha. Such a person cannot derive any benefit from the reading of Bhagavad Gita. However great a scholar he may be in the estimation of a layman, the Shraddhadhana or a faithful devotee can actually derive all the benefits of Bhagavad Gita because by the omnipotency of the Lord, he achieves
the transcendental bliss which vanquishes attachments and nullifies all concomitant material desires, miseries. Only the devotee by his factual experience can understand the import of this verse spoken by Vidura, the pure devotee of the Lord. The pure devotee of the Lord enjoys life by constantly remembering the lotus feet of the Lord by hearing Krishna Katha. See, very important. The pure devotee of the Lord enjoys life by constantly remembering the lotus feet of the Lord. How? By hearing Krishna Katha. For such a devotee, there is no such thing as material existence. And the much advertised bliss of Brahmananda is like a fig for a devotee who is in the midst of transcendental ocean of bliss. Hare Krishna. I will have to stop. Hmm. Maybe tomorrow, I don't know. I will be traveling to another city called Samarkand. We are planning to reach there by before 12. So if everything goes well, then I will continue there. 2 days I will be there in Samarkand. And finally on Monday, I will return. Monday morning. So by afternoon, I'll come to Delhi. But I'll straight go to Govardhan because we have the Japa Ashray session there from 19 till 23rd. 23rd is Saturday. There, Shil? Oh, I think 23rd is Saturday. Yes, Prabhu is Saturday. So I will try and come to IERI on 23rd. For this Saturday, you don't give invitation. You please, check with me. If I am traveling, then I won't be able to give it on Saturday. Okay. Then maybe I'll give on Monday. Is that okay? Okay, Prabhuji. Yeah. So I'll stop here because I have to travel tomorrow morning early. There are a few things I have to do. I just wanted to have the continuity. So please read. I don't think you people are reading. We completed one chapter here during our stay in Tashkent temple today. That chapter, we were reading the ninth canto, 14th chapter, Pururava enchanted by Urvashi. There are few devotees, but they very much, very, very attentively were hearing every day. And after completing the chapter, they gave very nice reflections. So when you are hearing Srimad Bhagavatam, so please put your heart in it. Try to absorb. Okay? So you all don't know whether you are aware or not. Pranav has recently been married. So congratulate him. Hare Krishna Pranav Prabhu. Congratulations to you. I had Thank you, congratulated bro. him. I didn't share with all of you because I was traveling. So he has entered the Grihastha life. And I seek the blessings from all our Grihastha devotees. Hmm. Ravinder Prabhu, Priyanka Mataji, Dayashir Prabhu, Ramya, Purushottam. Hmm. You should aspire. You are hearing, Pranav? Yes, Prabhuji. They all have blessed me, Prabhuji. Your wife is not hearing. She should hear. She should take inspiration from these Matajis. Okay, Prabhu, I will take her. Even Bhagyashini and our Kuber Prabhu, they are also daily hearing. At least so we have four couples here. One, two, three, and four couples who are ideally hearing, praying, and serving together. You have deities at home, Pranav? Picture I have, Prabhuji. Not Mm, deity. no. You come to Delhi, and when you come to Delhi, you spend one day in Dayashil Prabhu's house and also one day in Ravinder Prabhu's house. Okay. Okay, Prabhuji. So you will get a very good experience of how they are maintaining their Grihastha life
and also with deity service and devotional practice. It is very, very inspiring to see them very sincerely practicing. In the morning, I came today to check the japa. It was, I think, 5:36 local time. Only three people were there. Dayashil Prabhu and Ramya were there. Manini Mataji Dev was there. And Ravinder Prabhu and Priyanka were there. Pradeep, you were not there at 5:36 today. No, Prabhuji, actually, I am traveling from to Bengaluru. Okay. Where are you traveling? From Bangalore? From my home, Prabhuji, I went to my parents' house. Okay. Okay. So you are not in Bangalore now? To Bengaluru, Prabhuji. Today morning I came. Acha, today morning. Okay. Excused. What about you, Manoram? Why you were not there? Hare Krishna Prabhuji. I wake up, but I could not join Prabhuji. Actually, my mother actually I had to take care little. In the morning? Every day? Or Yeah, today? right now, Prabhuji, for few days actually, when health degraded, so I had to little take care. Okay. And Purushottam, what was your समस्या? हाँ, इतनी गर्मी में भी नहीं उठ रहे हो? अभी तो मई चल रहा है, और क्या चलिए? तो कल रात को लेट हो गया था सोने में। बेकार के बहाने। यार हम तो रोज सुबह 3 बजे उठते ही उठते हैं, हर हाल में उठते हैं। 10 बजे भी सोते हैं, 11 बजे भी सोते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You have to be, sadhana has to be strict. 5:30 बजे तक अगर जपा नहीं चालू कर रहे हो तो कंप्लीट कैसे होगा? हाँ, आप लोग ऑफिस टाइम में जब थोड़ी कर सकते हो, संभव नहीं है। तो प्लीज अपनी साधना पे प्लीज ध्यान रखिए। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रश्न तो है ही नहीं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, तो प्रश्न कहाँ से आएगा? अब बोलिए रम्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, लिटिल लाउडर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक लाइन आज तो ये प्रभु जी, ये मॉन्डेन गुडनेस क्या है प्रभु जी? मंडेन गुडनेस नहीं जानते आप? एक मंडेन है और एक दूसरा ट्रांसेंडेंटल है। मंडेन का मतलब है जो विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड है। मंडेन गुडनेस मीन्स, मंडेन गुडनेस कौन, हु विल एक्सप्लेन मंडेन गुडनेस? व्हाट इज मंडेन गुडनेस? बोलिए। यस प्रियंका। Hare Krishna Prabhuji. Those who have the mode of goodness, but he has that pride that he is superior than others. नहीं नहीं, ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज मंडेन गुडनेस? देयर इज मंडेन गुडनेस एंड देयर इज प्योर गुडनेस। व्हाट इज मंडेन गुडनेस? ध्यान से सोचो, व्हाट इज मंडेन गुडनेस? आपको खुद ही पता चल गया क्या? बोलिए। प्रभुपाद जी कई जगह लिखे हैं। प्रभु जी, those who are in the mode of goodness, like they rise early in the morning, they perform all the kind of karma kandi performance, but they are not performing the Krishna consciousness, like they are not performing नहीं sadhana नहीं, bhakti. नो, दैट इज नॉट मंडेन गुडनेस। यस दयाशील प्रभु। Prabhuji, when the goodness is contaminated by the mode of passion and ignorance, it is called mundane goodness, Prabhuji. Yeah, so in material world, this will always be there. Unless and until one is in pure goodness means no contamination of rajas and tamas. And in this material world, there is always the modes are fighting. Sometimes goodness is prominent, so it seems that we are in goodness, but it is mundane goodness. It is not pure goodness. So mundane goodness means when there is always the influence of lower moods also. Passion and ignorance, as Dayashil Prabhu said.
It is not pure goodness. So pure goodness one can only have when one becomes Krishna conscious. Connection with Krishna will remove one. That is what Prabhupada was explaining in this last purport. That people are mostly in the mode of ignorance and passion. ठीक है, और कोई प्रश्न तो पूछिए। हाँ, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी 13 नंबर वर्स में जो लिखा गया है प्रभु जी, ब्लिस ऑफ ब्रह्मानंद, व्हाट इज ब्लिस ऑफ ब्रह्मानंद? Bliss of Brahmanand. There is the bliss of Brahman, there is bliss of Brahmanand, then there is bliss of Paramanand, and there is the bliss of भगवान। अलग अलग लेवल्स पे हैप्पीनेस है। ठीक है ना? कोई शरबत पीता है तो उसको एक डिफरेंट आनंद होता है। कोई लस्सी पीता है उसको कुछ अलग पीता है, कोई मैंगो शेक पीता है उसको कुछ अलग होता है। सब में अलग अलग वैरायटी है ना। हाँ, लेकिन इन सब का आनंद का जो अनुभूति है और जो भगवान के आनंद की अनुभूति है, उसके मुकाबले ये क्या है, ये बहुत तुच्छ है। इट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो ब्रह्मानंद में है ना सुख है, तभी तो इतने योगी उस ब्रह्मानंद के साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। ब्राह्मण में भी सुख है। हाँ बोलिए रविंद्र प्रभु। यस हरे रियांशु, कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, ये वर्ष नंबर 11 में ये पर्पट में 3 पॉइंट जो मेनली बताया गया है कि वन शुड बी नेवर सेटिस्फाइड बाय हियरिंग कृष्ण कथा, देन हियरिंग ऑफ कृष्ण कथा मस्ट द थ्रस्ट मस्ट बी मोर, एंड देन वन मस्ट बी। और अब बोलिए हियरिंग ऑफ कृष्ण का था। आपने बोला था कि थ्रस्ट, हियरिंग का हाँ थ्रस्ट जो है बढ़ना चाहिए, हाँ, और ये कब बढ़ेगा? जब हमें डिटैच फ्रॉम फैमिली अटैचमेंट। ना, जब वो अंदर जाएगा, जब कृष्ण रसायन कथा हृदय में जाएगा, तभी थर्स्ट भरेगा। फैमिली अटैचमेंट अपने आप कम हो जाएगा। नहीं तो कृष्ण कथा में अटैचमेंट कहाँ से आएगा? फैमिली अटैचमेंट बहुत रहेगा तो कृष्ण कथा कहाँ चलती है? आपका एग्जाम्पल है ना, आपकी कृष्ण कथा बंद नहीं होती। शुक्र है भगवान की, आगे से चेंज नहीं हो जाए ना। हाँ, फैमिली लाइफ में हो लेकिन पूरी देखो ना, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। जितनी फैमिली है सब साथ में बैठ के सुनते हैं। तो फैमिली अफेक्शन कम होने का मतलब है जो फैमिली बॉन्डेज है बेस्ड ऑन बॉडली रिलेशन, उसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया? कृष्ण कथा में हो गया। इसलिए मैं प्रणब को बोल रहा था कि आप लोगों के एग्जाम्पल से सीखें। कम एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, हमारी सोसाइटी में एग्जाम्पल्स ज़्यादा है नहीं। 3 जने हैं, तीनों का अपना अलग अलग प्रायोरिटी है, तीनों की अपनी अलग अलग वे ऑफ प्रैक्टिस है, और तीनों का अपना अलग अलग कंसेप्शन है। हस्बैंड का भी, वाइफ का भी, बच्चे का भी एक साथ नहीं आते। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। वो देखो अभी वो पीछे कुछ और लिख ही रही है, उसको सुनाई देने में नहीं अच्छा लग रहा है। चुपचाप बैठ जा इधर, कुर्सी लगी है ना, बैठ जा इस पे, बैठ के सुन। वो भी भाग जाती है बार बार अमोहा, नहीं सुनती है। सुन रही है? अभी सुन रही है पुरुषोत्तम? नहीं सुन रही। अभी आई है। अच्छा बताओ आज क्या श्लोक पे पढ़ा हमने? बताओ अमोह, आज क्या सुना आपने? कृष्ण कथा सुना। कृष्ण कथा सुनने का क्या फर्क, क्या उसका लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट? क्या होता है जब कृष्ण कथा सुनते हैं? तो आपने सुना ही नहीं फिर कृष्ण कथा ना। अभी हमने ये बताया आज, विदुर जी बार बार बोल रहे हैं, हर वर्ष में यही बोल रहे हैं। बोले कि मैंने व्यास देव से बड़ा सुन लिया विस्तार से, आपके मित्र हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हुई।
मुझे और सुनना है। और फिर बोल रहे हैं कौन नहीं सुनेगा और क्यों नहीं सुनेगा, और जो सुनेगा उसको क्या लाभ होगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, सुनोगे तो सब समझ में आने लगेगा। अभी हम यहाँ बता रहे हैं आपको, हमने कल परसों भी बताया था कि बीच में कई दिन ट्रांसलेटर्स नहीं थे, कोई ट्रांसलेट करने वाला ही नहीं था। अब वो डिवोटीज आए थे तो हमने क्लास दिया, कन्वे हो गया, किसी तरीके से कन्वे हो गया। ना तो उनको इंग्लिश आती ना हमको रशियन आती, हमने एक नया सिस्टम निकाल लिया। हम प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स निकालते हैं, और श्रीमद् भागवतम का और चैतन्य चरितामृत का और भगवत गीता का रशियन वो है ट्रांसलेशन बुक्स में, तो उन्हीं ट्रांसलेशन से एक्सप्लेन कर देते हैं। हम उनको इंग्लिश पढ़ के सुनाते हैं, वो उसका काउंटर पार्ट रशियन पढ़ लेते हैं, और फिर थोड़ा सा समझा देते हैं, कन्वे हो जाता है। तो ईगर है सुनने के लिए, अभी उनको लग रहा है। यहाँ पे भी किसी ने ध्यान दिया नहीं, मैं आज बोल रहा था, तो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं कि अगर आप, आज सबसे ज़्यादा लोग आए थे, आज मेरा लास्ट क्लास था यहाँ पे, वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आज 20 से ज़्यादा लोग आए थे भागवतम सुनने के लिए। बहुत रेयर है, इस कंट्री में बहुत रेयर है। पहले तो शुरू में कई बार तो दो दो चार चार ही लोग थे, तो हम लोग क्योंकि लगभग 15-20 दिन से लगातार दे रहे हैं भागवतम क्लास, तो धीरे धीरे लोग आने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो कृष्ण कथा सुनने की जो इच्छा है वो तुरंत बढ़ जाएगी, जब जैसे ही उसका रस आने लगेगा। जैसे ही उसका आस्वादन शुरू हो जाएगा तो फिर जीव उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, और विशेष रूप से जो भक्त है वो तो आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है रविंद्र, क्या पूछ रहे थे आप? वही प्रभु जी मैं बोल रहा था कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये हियरिंग से स्टार्ट करेंगे या ये बस यही है, करते रहिए। डिटैचमेंट से ये। नहीं, हियरिंग से, हियरिंग करते रहेंगे तो बाकी सब चीज अपने आप आ जाएगी। शण्मतां स्वकथा कृष्ण, पुण्यो श्रवणम कीर्तनम, हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि, विधुनोति सुहृत्सिताम्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोकेर, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवण से कहाँ तक पहुंच जाएंगे? नैष्ठ की भक्ति तक। तो बस यही करते रहिए, छोड़िए नहीं। और संसार का कुछ भी चीज हो, कितना भी इंपॉर्टेंट लगे, है नहीं। अभी दिखा तो रहे हैं सारा कुछ, यही तो बता रहे हैं, पूरा विदुर जी बता तो रहे हैं। ये सारा का सारा जितना जो दिख रहा है इल्यूजन है, अभी इतना इन्होंने एक्सप्लेन तो किया। Family affection is an illusionary manifestation of the external energy, and it is the only impetus for all mundane activities. As long as there is mundane activity and the mind is absorbed in such engagement, one has to undergo the repetition of birth and death in the current material nations. यहाँ देखिए, people are most influenced by the mode of ignorance and some are influenced by the passionate mode of material nature. And under the spell of these two modes, a living being is actuated by the material conception of life. The mundane qualities do not allow a living entity to understand its real position. The qualities of both ignorance and passion strongly bind one to the illusionary body conception of the self. The best among the fools who are thus deluded and who are thus engaged in altruistic activity under the spell of material mode of passion. ये बता रहे हैं यहाँ, फिर बता रहे सोल्यूशन क्या है। Unless they are attracted by Krishna Katha, they will never be liberated from the bondage of material existence. Krishna Katha is the only remedy for all peoples of the world because it can situate one into pure consciousness of the self and liberate one from the material bondage. This is pure goodness. To preach Krishna Katha all over the world as recommended by Lord Chaitanya is the greatest missionary activity. And all sensible men and women of the world may join in this great movement started by Lord Chaitanya. This is the sum and substance. सुनिए,
रेगुलेटेड वे में सुनिए, थोड़ा पढ़िए भी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 पेज रोज पढ़िए। 2 पेज पढ़ने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप खाली 2 पेज भी डेली पढ़ने लगेंगे ना, सबका रीडिंग में देखता हूँ नील आता है, गलत बात है। रीडिंग नील रखना गलत बात है। गलत बात क्या है? अपराध है, भयंकर अपराध है। प्रभुपाद जी पूरे जीवन भर सोए नहीं, किस लिए? हाँ, ताकि हमारा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए, और हम पढ़ना ही नहीं चाहते। आप केवल 2 पेज भी पढ़िएगा, आप देखिएगा कितना जो दिमाग का कचरा है वो साफ हो जाएगा। आपका लाइफ बहुत हल्का हो जाएगा। फालतू की सोच और फालतू की स्ट्रगल दोनों से बचेंगे। सारी समस्या तो हमारी सोच में ही है ना, वही क्लियर नहीं होने देती है। वो कारण है तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव। तो उसको बता, कितनी बार तो बताया कि 100 बार जूते मारो और 100 बार झाड़ू मारो, उसका एक ही ट्रीटमेंट है, और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो 100 बार जूते मारना है, सवेरे रोज जप करना, 5 से 7 रोज जप करिए, 16 माला। और वो मनोराम प्रभु ने वो दे दिया, उसको लगाया था आज आपने? अच्छा, आज तो लगाया नहीं था, मैं वही देखने के लिए आज सुबह किया था कि वो लगाया है क्या। वो बहुत इंप्रूव कर देगा आपका जप, उसको ध्यान से फॉलो करिए। उतने ही टाइम में पूरा मंत्र लिखा हुआ आता है, पूरे मंत्र को पढ़िए, पूरे मंत्र को सुनिए, बोलिए, और अपना देख भी लीजिए कि पूरा कर रहे हैं या कम हो रहा है। निश्चित रूप से कम हो रहा होगा, पकड़ में आ जाएगा। हमारा मन बहुत ही बदमाश है। हाँ, वो 108 बार मन के नहीं गिनता है, वो कम को ही 108 कर देता है, फटाक से। हाथ पूरी पूरा जब उस मनके पे होता नहीं, उससे पहले हाथ आगे बढ़ा देता है, उसको आगे भगा देता है। तो यहाँ बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया है ये। तो इसका सदुपयोग करिए, इसका एडवांटेज लीजिए। श्रवण करते रहिए, कितनी श्रवण की महिमा है। भागवतम में जहाँ भी देखता हूँ, जहाँ भी पढ़ता हूँ, जिस भी जगह, सब जगह श्रवण की इतनी अगाध महिमा है, अगाध महिमा है। अब देखो, हमारी बड़ी कृपा है, यहाँ आने के बाद भी हमारी क्लास बल्कि और रेगुलर रही, एक दिन भी मिस नहीं हुआ। प्रैक्टिकली शुरू में 1-2 दिन हुआ था, तो हमको पता नहीं था, थोड़ा सेटल होने में लगा। उसके बाद ऐसा बन गया सिलसिला कि कुछ कुछ भी होता रहा, हमारा संडे को भी क्लास हो गया, जबकि यहाँ संडे क्लास कर रहे थे उसके बाद भी। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है, और स्पिरिचुअल रहा तो तुरंत भगवान बना देते हैं। सुनिए, सुनिए के बाद उसके बाद पढ़िए, लिखिए। गुरु महाराज का व्यास पूजा लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? बाद में मत बोलना कि नहीं लिखा है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपको कई बार वार्न कर चुका हूँ। गुरु महाराज का व्यास पूजा लिख लीजिए, लिखिए, प्रयास करिए। ठीक है, तो कृष्ण कथा सुनिए, जो कर रहे हैं बस वही करना है। मैंने 2-3 बार महाराज से पूछा कि महाराज मुझे क्या करना है? बोले जो कर रहे हो बस वही करते रहो, बस अपना हार्ट लगा के करते रहो, विथ पार्टिसिपेशन। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। रीडिंग नहीं कर रहे हो वो जरूर करिए, रीडिंग करिए। थोड़ा राइटअप लिखिए, आप लोग पहले लिखते थे, अब लिखते ही नहीं है। लिखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्लैरिटी आएगी। मैक्सिमम लोगों को फिलॉसफी क्लियर नहीं है। यहाँ भी देख रहा हूँ फिलॉसफी वाले लोग हैं ही नहीं, बहुत कम। कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कीर्तन करते हैं, कई कीर्तनियाँ बहुत अच्छे हैं। एक माता जी का भी 4 दिन पहले इनिशिएशन हुआ है, वो आज कीर्तन कर रही थी, बहुत जोरदार कीर्तन कर रही थी, बहुत ही बढ़िया कीर्तन कर रही थी। इन लोग को आज मैं सिखा रहा था, परम करुणा पाऊ दुई जन, निताई गौर चंद्र। यहाँ पे गौर निताई डिटीज हैं, तो मैं उनको सिखा रहा था कि ये भजन गाया करो। डिफिकल्टी हो रहा था क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करने में, लेकिन है ही नहीं कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, कोई सिखाने वाला, कोई है ही नहीं। इनिशिएशन हो गया, उसके बाद क्या है? महाराज के लेक्चर सुन लो। हाथ पकड़ के कोई सिखाने वाला, समझाने वाला है नहीं। आप लोग बहुत प्रिविलेज है, सही बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं मिलता है। जो डेली गाइड करे, कोच करे, ट्रेन करे, बहुत रेयर है ये। उसका एडवांटेज लीजिए, और बाद में और दौड़ाएंगे, भगाएंगे मुझे। अब पता नहीं कहीं और भेज देंगे, वहाँ टाइम जोन और ही डिफिकल्ट होगा। यहाँ तो टाइम जोन बहुत ईजी है, आधी घंटे का डिफरेंस है तो चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।
तो अभी है एडवांटेज, लीजिए पूरा इसका। हाँ, इस एसोसिएशन का पूरा एडवांटेज लीजिए। ध्यानपूर्वक श्रवण करने के बाद उसका अध्ययन भी करिए, उसका मनन भी करिए, उसको लिखिए, शेयर करिए। एक दूसरे का पढ़ते थे तो क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती नहीं थी? इतनी बढ़ती थी। पढ़ते थे ना सब। मैं तो रोज पढ़ता था। मुझे सबसे रिलेशेबल पार्ट लगता था कि जब आप लोग राइटअप भेजते हैं। लेकिन सबने बंद कर दिया, एक भी नहीं भेजता है। ये ठीक नहीं है। आप ही का लॉस है, मेरा क्या लॉस है? मेरा लॉस थोड़ी है, आपका लॉस है। तो करिए, माइंड की बात मत सुनिए। माइंड के डिक्टेशन को मत फॉलो करिए। ठीक है, अभी रखता हूँ। फिर कल भी हो, मोस्ट लाइकली कल हो जानी चाहिए क्लास, क्योंकि हम लोग समय पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं वहाँ का क्या एंगेजमेंट रखते हैं वो लोग। मुझे अभी तो बोले सैटरडे को क्लास देना है वहाँ समरकंद में। भी हैं, डिवोटीज हैं, उज्बेक डिवोटीज हैं कुछ, काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।